अस्सलाम वालेकुम और आज का जो है सेकंड एडिशन है. दिस इज़ Mudtoonz क्रिएटर मुदस्सिर भट्ट हेयर. हेलो टू एवरीवन. एंड आज के दिन जो है हम लोग जो हैं विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 बेसिक्स basic shapes of art. Normally it's also called the 5 basic shapes of the universe because these are the 5 basic shapes that exist in the entire universe. So like all the universe bodies or things that we can see physically are made up of these 5 basic shapes. They can be a complex collection of these 5 basic shapes, or they can be just simply these 5 basic shapes. So दुनिया में 5 shapes हैं जो exist करती हैं. So let's start with number 1. Number 1 is line or the line. Line is a straight is the distance between point A and point B. Mathematically speaking, थोड़ी सी ज़रा line overlap हो गई है. Line is basically distance between point A and point B. So lines को बनाने का तरीका काफ़ी आसान है. Listen, like you can take 2 points and then you can create a line. You can join these these points with a line. So this is the distance between 2 points is a line. It can be a horizontal line, something like this. It can be a vertical line. It can be a diagonal line. Or those kids who are not new to art and they are just starting art, they can always use this nifty little trick जो कि है कि आप 2 points बनाएं. You draw 2 points, 2 dots, and then you join these 2 dots. So it's like joining dots, and if you have like more than 1 dot, so you can like join this dot. It's a nice puzzle game you can do. And again, this is something like a zigzaggy design that exists in life. You can see this zigzaggy design inside clothes and on furniture, on some even this can also be a part of a tree. Like for example, this can be a part of a tree-like structure, or this can even be something like a leaf. So if you draw more than 1 line, you can have a design. And I realized one thing, okay, this is a vertical line and this is a horizontal line, and I think I might have said the opposite. मतलब मैंने vertical को horizontal कह दिया होगा और horizontal को vertical. So this is a vertical line. We are vertical line, and this is a horizontal line. So number 2 is square. Square is a geometrical shape that consists of 4 sides of equal length. So this is a square.
एंड इसको भी बनाने का एक बहुत आसान तरीका है. मसलन यू कैन हैव लाइक equal points drawn on a piece of paper, and it's quite easy to draw equal points on a piece of paper, and then you can just join the points and you can have a square. This sort of does not look like a good looking square because it looks more like a rectangle, but a square and a rectangle is square is basically the basic form and a derivation of that. मतलब कि rectangle जो है वो square में से निकला है, तो rectangle भी जो है square का ही एक extension है. तो आप ये भी कह सकते हैं कि number 2 is either a square or a rectangle. So second shape जो है उसको rectangle कहते हैं. Let's talk about the third shape, triangle. Triangle जो है is a pointed shape. Is a shape that consists of geometric shape that consists of 3 points. It can be a very perfect triangle. अब triangle की सबसे बड़ी example जो मुझे अभी तक ख्याल में आती है वो है pizza. And I know everybody loves pizza, so let's draw pizza with some anchovies and some mushrooms and some chilies and lots of smoldering cheese, yummy. So triangle is pizza. और triangle का मतलब जो शेप होती है वो थोड़ी सी पिज़्ज़े की जो है अपर क्रस्ट जो है ज़रा राउंड सी होती है. सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द ट्रायंगल शेप, क्योंकि जो बेसिक पिज़्ज़ा होता है वो तो राउंड होता है. इट्स राउंड इन शेप, सो इट हैज़ मैनी स्लाइसेस बट देयर ऑल इन द शेप ऑफ ट्रायंगल्स. सो ट्रायंगुलर शेप्स जो हैं पिज़्ज़े की होती हैं, और पिज़्ज़ा के अलावा ट्रायंगल शेप जो है, लेट्स से कि if you have a nose, if you have the human nose, that's also in the shape of a triangle. So you have this lower ridge of your nose, that's a triangle. Upper ridge of your nose, that's also a triangle, which is an extension of the triangle. And then the sides of the nostrils, that's a small semicircle. So let's talk about the fourth shape. It's circle, or also called ellipse. Ellipse को हम ओवल भी कहते हैं. सो अगर आप ऊपर से सर्कल को देख रहे होंगे, कोई सर्कुलर शेप को, तो वो सर्कल लगती है. और अगर आप नीचे से सर्कुलर शेप को देख रहे होते हैं तो इट लुक्स लाइक एन एलिप्स या ओवल. मसलन कि अगर आप ऊपर से मग्गे का मुंह देख रहे होते हैं तो वो आपको सर्कुलर रखता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देख रहे होते हैं तो इट लुक्स लाइक एन ओवल. सो सर्कल को डिफरेंट एंगल से जब आप ऑब्जर्व करते हैं सर्कुलर शेप्स को, तो दे कैन चेंज देयर शेप. तो इसलिए सर्कल और एलिप्स जो हैं, दे आर द फोर्थ बेसिक शेप इन द यूनिवर्स. और सर्कल तो बनाना बड़ा आसान है, मतलब यू जस्ट गो एंड ड्रॉ. और अगेन रेपिटेशन में अगर आप बनाते जाएंगे तो आपका जो सर्कल है वो वक्त के साथ साथ you will be able to draw a better looking circle. Also try to go from right to left and left to right to see in which direction you draw the circle best. You can always see which way you draw the circle. So this is a circle. और कुछ लोगों को सर्कल ड्रॉ करने में ये होती है आसानी कि वो जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट बना लेते हैं और फिर उसके इर्द गिर्द वो
अपनी पेंसिल को घुमाते हैं और फिर उसके बाद कुछ देर घुमाने के बाद वो ड्रॉ कर लेते हैं तो वो सर्कल बन जाता है. सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस निफ्टी ट्रिक, ड्रॉ अ पॉइंट एंड देन ड्रॉ अ सर्कल अराउंड दैट पॉइंट just to give you a small easier way instant way to draw a circle. Okay, let's talk about the final shape, the fifth and final shape, because we had 5 basic shapes. The fifth shape is arc. आर्क जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट प्रेजेंटली नहीं होगी, लेकिन अगले आने वाली क्लासेस, अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. So I'm just going to move the paper to a little bit to the side so that we can show you what the arc is. And arc is basically a shape, a geometrical shape that consists of 4 points. So this is an arc. So arcs can be of more than 3 points. For example, you can have like 7 or 8 points, and it can intersect each other as well. For example, अगर मैं एक आर्क बनाता हूँ तो मैं आर्क जो है उसको intersect भी कर सकता हूँ. So it can intersect itself and create another pattern. So arc is also a very important shape. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो अल्फ़ाबेट का एक लेटर है वो जो है आर्क से ही बना हुआ है, विच इज़ द लेटर एस. और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गया. सो एस, द लेटर एस इज़ ड्रॉन यूजिंग द आर्क. You can also not use the points and draw the letter S. The number 2 is also utilizing one arc. This is an arc from here to here, and this is a line. So a line and an arc makes up your simple letters, your simple text objects. Or you can also experiment with these two shapes to actually create your own interesting looking font designs and text designs. मतलब text art जो है वो बड़ा popular है आजकल. लोग जो हैं gift cards और उसके ऊपर जो है बड़ा interesting text art देते हैं. For example, ये जो एक bubble art है, this is very popular. So this bubble art, bubble text art, is using arcs and lines to so Bablu is a nickname of someone. You can, if you have like a cousin whose nickname is Bablu, you can like use this bubble art form, which uses the 5 basic concepts of space to create interesting text art. And then there's like jagged text art, like for example this is all using the line shape. So I think those kids who have a cell phone know what texting is, and texting I think is pretty much like, you can say, deadly. So this is a skull face. It's not drawn, but texting is
skull and bones. Let's make it skull and bones, like texting with like skull and bones, like it's hazardous. Texting and driving is definitely hazardous, so texting and driving. So you get this impression that it's cross skull and bones, like it's something sinister, it's something dangerous. So texting and driving. Again, skull. And bones for the eye. So texting and driving, V, another I.